name is Rasha. Welcome back to my channel. As this is a continuation video of the leftover topic that was child old age and healthcare service, so we will be continuing that topic in this video. So what are we waiting for? Without wasting much time, let's begin the topic. Firstly, we will understand what does this course means. In this, you will get to study the growth of child or an individual, the whole process, and the study of problems of elders, old age, the illness faced by them, study of NGO, which means the non-governmental organization, and many more things related to it. Now we will move to what will be the subjects in these 2 years. First, even here the subjects will be paper-wise, like the same way, paper 1, 2, 3. The subjects in 11th will be, paper 1 will be child development, paper 2 will be mother and child healthcare, paper 3 will be organization of NGO. In 12th, the subjects will be paper 1 gerontology, which means the old age care, paper 2 care of children with special needs, paper 3 organization of management, institutional of housekeeping. Now the best part is that even this course comes under vocational, so it will be a 50-50 pattern of theory and practicals. While doing this course, you will have to go on OJT, which means on-job training, as there is a subject called child development and children with special needs. So you all will be sent to a school to observe and understand the difference between a normal children and a special needs children. This is really very interesting. Even here you all have to maintain journals in both the years. A field trip will happen. Even you all will get to study the whole process of NGO. Actually, this course is for them who are interested in doing nursing or opening your own playgroup or a nursery school or working for an NGO. So these are the things कि आप ये junior college में पढ़ते हो in child old age healthcare service, and the most beneficial part is that this course comes under vocational. So, जैसे मैंने कहा है कि वोकेशनल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप स्किलफुल बनते हो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है. लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, अगर बच्चा प्रैक्टिकली करता है तो आसान हो जाता है समझने में, वो कोर्स पढ़ने में मजा आने लगता है. सो अगर आपको वो चीज़ पढ़ते पढ़ते मजा आ रहा है, आपको यहाँ सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाई जा रही है, उसके बाद साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइक प्रैक्टिकली कराया जाएगा. और जब प्रैक्टिकली करते हैं तो एकदम मतलब दिमाग के अंदर बैठ जाता है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ या फिर मैं ये कर रही हूँ, तो ये चीज़ इससे रिलेटेड है. फिर उस वही चीज़ करते करते आप टैली करते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज को कि हाँ मैंने थ्योरी में ये पढ़ी थी तो ये हाँ ये चीज़ हो रहा है. आपको बिलीव होता है कि हाँ जो मैं पढ़ी हूँ वो ये हाँ काम आ रहा है. लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको समझने में. अगर आप सिर्फ रट्टू तोता पढ़ रहे हो तो मतलब इतना वो बेनिफिट नहीं दे पाता है, उतना आउटकम नहीं आता है जितना आप चीज़ पढ़ते हुए भी प्रैक्टिकली उसको करते हो. तो वोकेशनल में जैसे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना, तो ये सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करती है. नो वन एल्स प्रोवाइड दिस. So that is it for today's video. If you got this video informative, so do comment in the comment section to make more such videos like this. Till then, take care and bye bye.